Hello, friends, and welcome back in my lecture series. And today we discuss about the unit number 5, wildlife biology. In our third lecture, we can discuss the Gir National Park. In wildlife biology, we can teach the national park, sanctuary, difference between national park and sanctuary, importance of the wildlife. So, in our previous lecture, we can discuss the importance of the wildlife, difference between national park and sanctuary, but today also we discuss about the mm, uh, just in brief. So the Gir forest is the largest compact tract of the deciduous forest in the semi-arid western part of India. Is the last abode of the big and regal predators. Asiatic lion Panthera leoparsica एंड एंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो पर्टिकुलर गिर में जो एशियाटिक लायन है पैंथेरा लियोपर्सिका, उसके लिए ही नेशनल पार्क डेवलप किया गया था। इन द टाइम ऑफ नवाब, when Nawab is the king of the Junagadh, the time the lion population is decreased due to the poaching. एक टाइम था जब शिकार के लिए जो जो किंग थे वो शिकार करते थे, लायन का हंटिंग करते थे, तब उस टाइम पे लायन की पॉपुलेशन से वो डिक्रीज हो गई थी। यहाँ पे जो लायन का नाम दिया गया है पैंथेरा लियोपर्सिका। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो पैंथेरा इज जीनस, लियो इज स्पीसीज एंड पर्सिका इज सब स्पीसीज। क्यों सब स्पीसीज दी गई है? क्योंकि लाइन का जो पर्टिकुलर एरिया है वो एक तो देखा जाए तो गिर है इन गुजरात इन इंडिया, जो गिर है उसका टेरिटरी एरिया है, और सेकंड वन इज द अफ्रीका। उसके अलावा लाइन की पॉपुलेशन कहीं भी नहीं है। ठीक है, अगर हम अफ्रीकन लाइन की बात करें, so African lion is called, or its scientific name is the Panthera leo. उसकी सब स्पीसीज है वो भी लियो है। बट यहाँ पे अगर सब स्पीसीज की बात किया जाए तो सब स्पीसीज में हमारे जो गिर लाइन की बात किया जाए तो पर्सिका है। पर्सिका मीन्स केसरी सी। ठीक है, उसकी सब स्पीसीज है। The sanctuary is internationally acclaimed for successfully saving this precious species from this brink of extinction. अगर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात किया जाए तो वो इंटरनेशनली फेमस है क्योंकि वो सक्सेसफुली जो प्रीसियस स्पीसीज है, जो मेजर कार्निवोर स्पीसीज है, उसको एक्सटिंक्शन है, उसको अगर पॉपुलेशन कवर कर लिया। अभी 2020 की बात करें तो 674 जितनी स्पीसीज लैंड की रिकॉर्ड हुई है, तो कहाँ 20 और कहाँ 674। तो ये जो गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी फेमस है। और उसका अगर बात किया जाए तो लोकल पीपल, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गिर मालधारी पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, उन सब का उसमें बहुत सारा मतलब वर्क है उसके कंजर्वेशन के पीछे। और ख़ास करें डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका बहुत सारा मतलब यहाँ पे जो बात किया जाए लायन कंजर्वेशन की, तो वो सब लोगों ने मिलके लायन को अच्छी तरीके से ख्याल रखा है, तभी जाके उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। It was declared as a sanctuary in 1965. 1965 में गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो डिक्लेयर हुई। Subsequently, out of the 1153.42 square kilometers area of the sanctuary, an area of 258.71 square kilometer was declared as a national park. सेंचुरी का जो टोटल एरिया है वो 1153.42 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो नेशनल पार्क का एरिया है वो, नेशनल पार्क है वो सेंचुरी के
अंदर ही आया है, बट उसका जो एरिया है वो कॉरिडोर एरिया है वो 258.71 स्क्वायर किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट हैज ए topography made up of successive rigid isolated hills, plateaus of valleys, beside being the last about the aesthetic line. Gir forests form a unique habitat for many mammals, reptiles, birds and insect species along with a rich variety of flora. यहाँ पे अगर टोपोग्राफी की बात की जाए तो वहाँ पे जो गिर का जो है वो रिजिड, rugged, isolated hills, plateaus एंड वैलीज, इस तरीके का जो एरिया है वो वहाँ पे है। मीन्स किस तरीके से हिली एरिया है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, ठीक है, वैली है, मीन्स रिवर एंड एरिया भी है। और उसके अंदर जो बात किया जाए तो कई सारी स्पीसीज का हैबिटेट भी है, लाइक मैमल्स की और कार्निवोर्स की, हर्बीवोर्स की, इंसेक्ट की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, वो सब की वहाँ पे हैबिटेट है। The overwhelming presence of the omnipotent big cat diverts the attention of the common man from the remarkable birds population that is the sanctuary has. However, the bird of Gir sanctuary did attract the great ornithologist Dr. Salim Ali, who believed that had the aesthetic lines not been there, that area would have been one of the most फैसिनेटिंग बर्ड सेंचुरी ऑफ द कंट्री। अगर वहाँ से गिर एरिया में से अगर हम बात करते हैं लाइन नहीं होते तो वो या वहाँ पे वर्ल्ड की बात ना करें तो कंट्री की सबसे अच्छी बर्ड सेंचुरी होती। पीपल मोस्टली लिंक गिर विथ मालधारीज हु हैव सर्वाइव्ड थ्रू द एज बाय द हैविंग symbiotic relationship with the lion. यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, symbiotic. We can discuss. They are religious pastoral communities living in Gir. Their settlements are called Nes. जो बात किया गया हुआ है यहाँ पे अगर मालधारी कम्युनिटी की, तो मालधारी कम्युनिटी है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किस तरीके से सिम्बायोटिक? तो जो सेंचुरी एरिया में जो लायन रहते हैं, प्रीडेटर रहते हैं, बिग प्रीडेटर है, लायन है, लेपर्ड है, उसकी वजह से उसका जो एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है, मालधारी मीन्स वो पेट एनिमल, काऊ, बफेलो, उसको लेके सर्वाइव करते हैं। बट लायन है, कार्निवोरस है, उसका जो फूड है वो एनिमल्स है, ठीक है। तो मालधारी को वहाँ पे गिर में क्या मिलता है? तो गिर में उसके एनिमल्स के लिए ग्रास मिलता है, उसको ग्रेजिंग के लिए लैंड मिलती है। बट उस लैंड में कार्निवोरस, मेजर कार्निवोरस रहते हैं, जो पैंथेरा लियोपर्सिकल लायन है वो रहते हैं वहाँ पे, तो वो एनिमल को किल भी करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से उसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। At present, Gir Forest of Gujarat, India is only place where this race of lion, that is ascetic lion, is found in natural habitat. इंडिया में दिस फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पे लायन है उसको उसका नेचुरल हैबिटेट में सर्वाइव करता है। अनलाइक द अदर बिग कैट्स, lion is tolerant of the presence of human being and it even live near the human settlements. अगर हम अदर एनिमल्स की बात करें, अदर कार्निवोर्स की बात करें, तो वो ह्यूमन के नियर बाय सर्वाइव नहीं कर सकते, बट लायन ही ऐसा एडेप्ट हो गया है कि नियर बाय ह्यूमन कम्युनिटीज के नियर बाय उसका सर्वाइवल है। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी इन ब्रिटिश रूल्स, lion population touch and all time low of 20 in 1930। देखो हमने जहाँ पे बात किया था कि एक टाइम था जब ब्रिटिश रूल और गवर्नमेंट नवाब का जब शासन चल रहा था, उस टाइम पे लायन की पॉपुलेशन है वो एकदम से डिक्रीज हो गई थी।
और उसकी वजह से उसका कंजर्वेशन भी नीडेड. The serious conservation efforts by the Nawab of Junagadh saved the species from the brink of extinction. जब नवाब के टाइम था वहाँ से लाइन का कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ. The subsequent effort by the forest department has successfully brought the population to the present respectable status of 523, and right now is 674 number of the majestic animal. So is the great achievement of our Gir particular. We proud feel because of the whenever lion population is 20 and right now is the lion population is nearby 700. Nearby 700. Introduction and importance of the wildlife is the unit number 5.1. Wildlife is defined as a living thing that are neither human nor domesticated, especially mammals, birds, and fish hunted by man. The term wildlife includes animals as well as the plants which form a part of any habitats in nature. वाइल्ड लाइफ मीन्स यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ में लिविंग थिंग्स दैट आर नाइदर ह्यूमन नॉर डोमेस्टिकेटेड. डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है. डोमेस्टिक मीन्स अवर पालतू पेट एनिमल काऊ बुफेलोज वो वाइल्ड लाइफ में सर्वाइव नहीं करते हैं. ठीक है. स्पेशली मैमल्स. यहाँ पे मैमल्स की बात की गई तो जो वाइल्ड एनिमल है वो सर्वाइव इन द वाइल्ड. वी कैन सी आवर बैकग्राउंड पिक्चर वन पैंथेरा लियोपर्सिका लाइन वी कैन सी इज द वाइल्ड एनिमल. Wild animals means any non-domesticated animals found wild in nature. यहाँ पे साफ दिया गया है कि wild animals means जंगल के प्राणी means non-domesticated जो पालतू नहीं है. Found wild in nature जो wild nature में दिखते हैं. Includes the both vertebrates and invertebrates. Some wild animals are so characteristic that they become symbol of the home countries. यहाँ पे अगर सिंबल की बात किया जाए तो हम कई सारे कंट्रीज को सिंबॉलिक उसके एनिमल के सिंबल से भी जानते हैं. तो टाइगर इज एसोसिएटेड विथ इंडिया एंड वेल kangaroo इज एसोसिएटेड विथ ऑस्ट्रेलिया. Man has been interested in wild animals since the dawn of civilization. He hunted them for food and clothing. यहाँ पे एनिमल्स को किल करने की बात आ रही है तो कई सारे एनिमल्स को किल भी उस टाइम पे करते थे ड्यू टू द खाने के लिए और उसका जो स्किन है उसको क्लॉथ करने के लिए. Observe them for joy and herds of the melodious notes of birds for pleasure. In India, the idea of protection and preservation of wildlife has been the integral part of region and culture since very ancient time. Causes of wildlife deterioration are overpopulation, green habitat loss, grazing domesticated of fauna population, hunting, poaching, isolation and development etc. वाइल्ड लाइफ का अगर डिटोरिएशन की बात किया जाए उसको अगर हम उसकी मतलब वाइल्ड लाइफ को हम क्या बोलते हैं उसको डिटोरिएशन मीन्स कि उसकी हार्म की बात किया जाए उसका डेंजरस उसके ऊपर जो मतलब खतरा है उसकी बात किया जाए तो ओवर पॉपुलेशन भी है, हैबिटेट लॉस भी है, ग्रेजिंग डोमेस्टिकेटेड ऑफ फोना. अगर हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है उसको हम वाइल्ड लाइफ में अगर ग्रेजिंग चालू करा दे तो वाइल्ड का जो ग्रेजिंग एनिमल्स है
जो मतलब सांबर है, नीलगाय है, एंटेलोप है, ब्लैक बग है, ब्लू बुल है, वो कहाँ पे रेसिंग के लिए जाएगा, उसकी वजह से भी उसकी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। Importance of wildlife. Wildlife is source of danger to human life. Conservation of wildlife becomes necessary and of great importance due to the many value to mankind. We can see the one background in the one lion can see, and small lion we can see it's called cubs. Okay, lion baby is called cubs. Ecological value means destruction of wildlife may cause upset in the ecological balance, resulting in severe consequence. Thus, the protection of every animal species is great importance to the quality of life and to the survival of man himself. By rendering of planet consequences, that the protection is every animal species great importance to the quality of life, the survival of the man himself. By rendering the plants unique habitable for animals, we will not able to the avoid extinction of the ourselves. Commercial value. Wildlife forms an important natural resource, and it is also a renewable resource with proper care and management. It can yield good dividends and other in even earn foreign exchange of from marine fisheries, freshwater fishes, and other aquatic creature from the live or dead animals. यहाँ पे बात किया गया अगर कॉमर्शियल वैल्यू की बात हम करते हैं तो कॉमर्शियल वैल्यू में क्या है, हम एनिमल एक्सचेंज भी कर सकते हैं, उसकी वजह से भी हम अपनी डाइवर्सिटी संभाल सकते हैं। गेम वैल्यू की बात किया जाए तो वाइल्ड लाइफ हैज़ इट वर्थ एंड गेम इन सेवरल कंट्रीज, बिलियंस ऑफ पीपल हंट द फिश फ्रॉम रिक्रिएशन, स्पेंडिंग बिलियंस ऑफ डॉलर ऑन द स्पॉट। गेम वैल्यू की बात किया जाए तो गेम वैल्यू में भी यहाँ पे स्पॉटिंग लाइक होता है, उस वैल्यू में बिलियंस ऑफ डॉलर भी स्पॉट में लोग खर्चा करते हैं। साइंटिफिक वैल्यू की बात किया जाए तो साइंटिफिक स्टडी में भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर डायरेक्ट वैल्यू टू ह्यूमन। Thus, the research monkey have contributed the presence knowledge of the human blood groups. रिसर्च मकाऊ की बात करते हैं तो वो एनिमल्स जो ब्लड ग्रुप क्रिएट हुआ है उसके लिए भी उसका बहुत बड़ा योगदान है। रिसर्च मकाऊ उसके ऊपर उसके बेस से ही यहाँ पे जो बात करते हैं तो मीन्स ब्लड ग्रुप डिटेक्ट हुआ और उसकी साइंटिफिक वैल्यू है। एस्थेटिक वैल्यू, देयर इज द ग्रेट वर्ल्ड वाइड aesthetic value of the wildlife because their sheer beauty and appeal to the human spirit. A world without melodious birds, graceful beasts, and rapturous forest would be poorer place of human to live in. Without wild animal, a countryside look dead, static, monotonous, and like picture postcard. जो यहाँ पे जो सेंटेंस में दिया गया है कि वाइल्ड लाइफ में अगर बर्ड्स की बात किया जाए, इंसेक्ट की बात किया जाए, बटरफ्लाई की बात किया जाए, बिग एनिमल्स की बात किया जाए तो वो सब एक म्यूज़िक टाइप है। वहाँ पे रिवर भी आ जाती है, प्लांट्स भी आ जाता है, ठीक है। वो एक स्पिरिट मतलब उत्साह क्रिएट करता है हमारे अंदर। बट अगर हम वहाँ से सारे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट भी निकाल दिए तो एक पिक्चर पोस्टकार्ड जैसा ही लगेगा, विदाउट लिव।
people feel pressure, satisfaction and happiness from the presence of वाइल्ड लाइफ. अगर हम प्रेशर में है तो वाइल्ड लाइफ में जाके वहाँ पे रिलैक्स भी हो सकते हैं. इथिकल वैल्यू जो बोलते हैं, जनरली पीपल थिंक that they have no right to destroy wild animal. Rather, they feel and obligates for the conservation of nature and protection of wildlife. In fact, all religion branch and healthy respect and reverence of wild and consist of wrong to take the animal life and an animal. Unit number 5.2 is the difference between national park and sanctuaries. तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंस. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, वही डिस्कशन थोड़े में आज भी कर लेते हैं नेशनल पार्क की. नेशनल पार्क और ए नेशनल पार्क may be defined as an area declared by the statute for the purpose of the protecting and propagating of developing wildlife therein or its natural environment for their scientific education and remarkable value. ये जो एरिया है नेशनल पार्क का, वो किस लिए डिक्लेयर हुआ है? प्रोटेक्शन, प्रोपोगेशन and purpose of protecting, propagating and developing of wildlife. That's why हम वहाँ पे conservation possible है. A national park is an area which is strictly reserved for and welfare of wildlife and where activities such as the forestry, grazing or cultivation are not allowed. Private ownership right to habitat manipulation and not permitted in the national park. यहाँ पे एक भी चीज़ के लिए परमिशन नहीं है जो नेशनल पार्क का एरिया है उसमें. सेंचुरी की बात किया जाए तो सेंचुरी इज एन एरिया विच इज रिजर्व फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल ओनली operations such as the harvesting of timber, collection of minor forest product and private ownership right to be allowed for they do not affect of animal diversity. यहाँ पे अगर सेंचुरी की बात किया जाए तो उसमें थोड़ी बहुत छूट छाट दी गई है. हम कलेक्शन ऑफ द फायर टिम्बर्स, ग्रेजिंग वो सब अलाउड है सेंचुरी एरिया में, पर वहाँ पे हमको डू नॉट अफेक्ट द एनिमल डाइवर्सिटी. पर वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ की जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसको अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. द डिफरेंस बिटवीन ए सेंचुरी एंड नेशनल पार्क इज confusing. Hunting without the permit is prohibited and grazing or movement of cattle regulated in the sanctuary. The difference between sanctuary and national park is confusing. यहाँ पे भी वर्ड दिया गया है confusing, क्योंकि ये थोड़ा बहुत confusing है. Hunting without permit is prohibited and grazing or movement cattle is regulated in sanctuary. वहाँ पे एनिमल का हंटिंग जो दिया गया है वो नहीं कर सकते, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिशन है. बट वहाँ पे ग्रेजिंग करवा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे मूवमेंट हो सकते हैं. बट हंटिंग एंड ग्रेजिंग आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क. नेशनल पार्क में वो सब प्रोहिबिटेड है. विच में बी एस्टेब्लिशमेंट विद इन द आउटसाइड ऑफ द सेंचुरी. This is a basic difference between national park and sanctuary. National park is declared by state government under the section of 51 of the Wildlife Protection Act 1972. जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वो डिक्लेयर हुआ है. उसकी वजह से सारे एनिमल में जो मतलब एक्ट है, रूल्स है, वो सब जो पीपल पे लागू पड़ते हैं, जो ह्यूमन पे लागू किया गया है, उसकी वजह से उसका प्रोटेक्शन हो रहा है. अदरवाइज उसका पोचिंग बहुत हो रहा था. सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. बोथ आर डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट बट अंडर द सेक्शन ऑफ 18(1) वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. उसका जो स्टेट्यूट है, उसका जो रूल्स है और नेशनल पार्क का जो रूल्स है वो बोथ आर थोड़ा बहुत डिफरेंट. द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क इज वेल डिफाइंड एंड accurate at the very time of this is declared. नेशनल पार्क का जो बाउंड्री है वो
क्लियर, वेल डिफाइन होता है. But the boundary of the sanctuary is demarkable approximately at the time of its declaration. But the sanctuary का जो particular area है उसकी जो boundary है वो at the time जब declare हुआ तब उसका at the time declare approximately था. ठीक है. In national park the claim of right of land or in national park the claim or right of the land of people is settled before the declaration, and in sanctuary the claim of right to be land is the people settle after the declaration. नेशनल पार्क में अगर वहाँ पे कोई सेटल होता है तो उसको बिफोर डिक्लेरेशन, डिक्लेयर हुआ उससे पहले वहाँ रहते थे, उसके बाद वहाँ रहने की मंजूरी नहीं है. ठीक है, परमिशन नहीं है. बट सेंचुरी में उसका डिक्लेयर होने के बाद भी वहाँ पे परमिशन मिल सकती है. द alternation of the boundary of a national park may be done only after passing through the legislative assembly, the state government, and the sanctuary, the alternative boundary the sanctuary may be done by the order of the state government. उसके लिए अगर नेशनल पार्क की परमिशन लेनी है तो उसके लिए असेंबली बिठाई जाती है. बट अगर स्टेट गवर्नमेंट थ्रू परमिशन सेंचुरी को मिल जाती है. ठीक है. बट नेशनल पार्क के लिए उसके रूल्स के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसको बिठाना पड़ता है. इन द नेशनल पार्क ग्रेजिंग और मूवमेंट ऑफ कैटल इज नॉट परमिटेड. देखो यहाँ पे आ गया कि उसके अंदर ग्रेजिंग और कैटल मूवमेंट परमिशन नहीं है. बट इन सेंचुरी ग्रेजिंग और मूवमेंट ऑफ द कैटल may be permitted for the benefits of the wildlife. In national park fishing is not permissible or permissible, but in sanctuary fishing may be allowed. अगर नेशनल पार्क के एरिया में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे कोई भी डैम साइट है तो वहाँ पे फिशिंग की परमिशन दिया नहीं जाता. बट अगर सेंचुरी एरिया में है तो वहाँ पे फिशिंग की परमिशन में भी अलाउड. डेट्स वाई हम यहाँ पे गुजरात के गिर नेशनल पार्क की बात करें तो वहाँ पे 4 डैम है और उस डैम की वजह से वहाँ पे कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं. डेट्स वाई वहाँ पे बर्ड्स की काफ़ी सारी पॉपुलेशन भी रिकॉर्ड हुई है. ठीक है. डेट्स फॉर एवरी नेशनल पार्क. There are the 4 national park and 25 sanctuary in particular Gujarat. This is the species we can see. The Panthera leopersica is the for Gir National Park. Is the locality is the Gir. This is near the small line is called cubs. And now we discuss about the Gir National Park in detail. Is our unit number 5.3, and 2 national park are there. Number 1 is the Gir National Park and number 2 is Marine National Park. So Gir National Park is well known as for the Asiatic lion Panthera leopersica. Gir is known as the last form of the Asiatic lion. Gir today is the only place in the world outside Africa where the lion can be seen in natural habitat. So we discuss in detail this sentence. So the Gir National Park is well known as for the Asiatic lion Panthera leopersica. Earlier also we discussed the Panthera leopersica. Persica is the subspecies, is only seen in the particular Gir area. Gir known as the last line of the for Asiatic lion or Panthera leopersica. Gir today is the only place the world outside Africa where can. अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पे गिर एक ही चीज़ ऐसी है जहाँ अफ्रीका को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में लाइन है वो नेचुरल हैबिटेट में सीन कर सकते हैं. इट्स लोकेशन इज द नेशनल पार्क and sanctuary located in Sasan. Sasan is the particular national park area
and city of the Sasan nearby national park is 60 kilometer away from the Junagadh in Gir Somnath district. Area of this national park or sanctuary is a sanctuary established in 1965 and 1975. Area of 258.71 square kilometer is declared as a national park. सेंचुरी जो फॉर्म है वो कब हुई? सेंचुरी है वो 1965 में फॉर्म हुई और नेशनल पार्क है वो 1975 में डिक्लेयर हुआ और उसका जो नेशनल पार्क का जो एरिया है वो 258.71 स्क्वायर किलोमीटर इज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क. एंड अगर सेंचुरी की बात किया जाए तो उसका एरिया है 1412.13 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ द गिर नेशनल पार्क इज, नेशनल पार्क का एरिया है वो 258.71 स्क्वायर किलोमीटर एंड एरिया ऑफ द सेंचुरी इज द 1412.13 स्क्वायर किलोमीटर. याद रखिएगा कि गिर नेशनल पार्क एंड सेंचुरी का एरिया कितना है. टोटल एरिया है वो कितना है 1412.13 स्क्वायर किलोमीटर एंड उसके अंदर जो नेशनल पार्क आया है सेंचुरी के अंदर उसका एरिया है 258.71 स्क्वायर किलोमीटर. अगर यहाँ पे हम क्लाइमेट की बात किया जाए तो गिर हैज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट विच इज वेरी हॉट ड्यूरिंग द समर. 3 seasons, summer, winter and monsoon are distinct. क्लाइमेट वेदर की बात किया जाए तो गिर है वो ट्रॉपिकल मानसून एरिया है. ठीक है, अगर मानसून की सीजन में हम जाए तो पूरा ग्रीन एरिया वहाँ पे वी कैन सी, बट अगर समर की सीजन में जाए तो पूरा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जैसा हो जाएगा एक्सेप्ट द रिवराइन एरिया. ठीक है, late November to early March is cool and dry, followed by the period and bulk of precipitation is received during July and August. The temperature drops down to about 10 degrees Celsius in winter. अगर विंटर की बात किया जाए, यहाँ पे ठंडी की सीजन की बात किया जाए तो वहाँ पे 10 डिग्री जितना टेम्परेचर हो जाता है. ठीक है, एंड राइज टू अबाउट 43 डिग्री सेल्सियस इन समर. और अगर समर की बात किया जाए तो 43 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर राइज होता है. मिड जून टू सितंबर इज द मानसून रेनफॉल एंड रेंज बिटवीन द 600 mm to 1000 mm. Gir is one of the few remaining forests comprise the diverse habitat open scrub country. Deciduous and tropical thorn forest are evergreen corridor along the river side. अभी हमने जो डिस्कस किया कि अगर रिवर साइड की बात किया जाए तो वहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा 12 मंथ एवरी पूरी सीजन मानसून विंटर समर उसमें वहाँ पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जैसा नहीं दिखेगा बट एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा. ठीक है, वाटर रिसोर्स की बात किया जाए तो वाटर रिसोर्स गिर में जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो वाटर रिसोर्स उसका क्या कहाँ से है तो गिर फॉर्म्स द कैचमेंट ऑफ 7 perennial rivers wise Hiran, Saraswati, Datardi, Singoda. Singoda is the name by the male, but we can discuss after. Machundri, Godavari and Raval. During the peak summer, surface of the water wild animal is available at only about 300 water points. In order to tap water resources, 4 dams have been constructed during along the Hiran, Machundri, Raval and Singoda respectively. That total catchment area is the 4 reservoir is 820 square kilometer. देखो यहाँ पे जो 7 जो रिवर्स है हिरन, सरस्वती, धातरडी, सिंगोड़ा, मछुंदरी, घोड़ावली एंड रावल, ये जो 7 जो रिवर है
वहाँ पे अगर सबकी बात किया जाए तो 6 रिवर है, उसका नाम फीमेल्स है, बट सिंगोडा इज ओनली फॉर नेम फॉर इन द ऑन द मेल, ठीक है। जो उसका नाम है वो मेल से है, लाइक सिंगोडा, बट बाकी का नाम है जो मच्छुंदरी, गोलावली, रावल, हिरन, सरस्वती, तातड़ी, वो सब फीमेल है, एक ही पुल्लिंग है, ठीक है। और अगर हम समर की बात किया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेस्ट है, उसने वहाँ पे 300 वाटर पॉइंट्स भी बना रखे हैं, क्योंकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ना हो लाइन को वाटर रिसोर्स के लिए। लाइन और अदर एनिमल्स जो हर्बी वॉर्स है वो सब उन एनिमल को समर सीजन में वाटर के लिए बहुत दौड़ना ना पड़े, उसकी वजह से 300 वाटर पॉइंट्स भी बना रखे हैं, ठीक है। 4 डैम भी है वहाँ पे, हिरन, मच्छुंदरी, रावल एंड सिंगोड़ा, वहाँ पे 4 डैम सेट है, उसकी वजह से वहाँ पे वाटर रिसोर्स है वो एज इट इज़ वहाँ पे टिका रहता है। फ्लोरा की बात किया जाए, वहाँ के प्लांट की बात किया जाए, देख लीजिए, more than 507 plant species are recorded in Gir forest. More than 507 plant species are recorded in the Gir forest. Flora of Gir National Park consists of a mixed deciduous forest interspread with semi-evergreen and evergreen trees, scrub, jungles, large patch of grassland and rocky hills. The forest remains dry for most part of the year, scrub trees like bulbuls and few flowering trees. अगर यहाँ पे फ्लोरा की बात किया जाए तो जो फ्लोरा है, और फ्लोरा की बात किया जाए तो विदाउट फ्लोरा प्लांट स्पीसीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव, दैट्स वाई द फ्लोरा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हम जस्ट सोच सकते हैं कि अगर वहाँ से प्लांट की स्पीसीज निकाल दी जाए तो सारे बर्ड्स हैं, अभी वॉस है, इंसेक्ट है, वो सब वहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे और वहाँ से लुप्त हो जाएंगे। बट जितना इम्पोर्टेंस एनिमल्स है उतना भी प्लांट स्पीसीज है, और कई सारी प्लांट स्पीसीज है वो फॉर बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं, वो बटरफ्लाई को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए फ्लोरा भी इतना इम्पोर्टेंट है। और 507 प्लांट स्पीसीज आर रिकॉर्डेड इन द गिर फॉरेस्ट। So many books also publication by the Department of Forest and other people and other researcher also. You find the distinct belt of vegetation along the main rivers and streams. The tree and in deciduous forest are teak, the flame of the forest, acacia, banyan, jujubes, jamun, tendu and dhak. Flora of the Gir comprises of various species of the plant like the jambu, karjan, umbro, wad, kalam, charal, cirrus, and ambli. Is the name of the cirrus and ambli is the name of the plant species. Gir is blessed with the wealth of about 2,375 diverse range of the fauna species. According to last statistics, Gir conserved nearly 300, not 300, 300 is the 300 is the 2010, but right now 2020 in the 674 lion species and also the 300 leopard species. But what makes the Gir famous? It is the reserve of Asiatic lion. That is the only second place after the Africa have the Asiatic lion. Scientific name for the Asiatic lion is Panthera leo persica and Panthera leo. Panthera leo is the African lion and Panthera leo persica is the Asiatic lion. And the Asiatic lion of the Gir National Park are little smaller when compared to the African ones. यहाँ पे जो बात किया वो आए को एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे हमको लाइन वो फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलता है, अफ्रीका को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। और यहाँ का जो अफ्रीकन लाइन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो अफ्रीकन लाइन्स से वो स्मॉलर वन है। पार्ट ऑफ लाइन एंड लेपर्ड्स गिर बोट्स अबाउट द 300 बर्ड स्पीसीज, 37 रेप्टाइल स्पीसीज, 38 मैमल स्पीसीज एंड 200 इंसेक्ट स्पीसीज।
are there. The fauna of Gir may be categorized into the following groups: Gir carnivorous, Gir herbivores. इसको categorize किया है. The major carnivores one gets to see the included the Asiatic lion, Indian cobras, Indian leopards, sloth bears, striped hyena, golden jackals, Indian mongoose, jungle cat, desert cat, Indian plums, civet, etc. And herbivores means the major herbivores that can be spotted here are the wild boar, नीलगाय, चित्तल, फोरहॉर्न, चिंकारा, एंटेलोप एंड सांबर. जो मेजर कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स में शिकारी प्राणी है, उसमें हम एसेटिक लायन, कोबरास, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बियर, स्ट्रैप हाइना, उन सब का मतलब इंक्लूडेड कर सकते हैं. और हर्बीवोर्स में हम जो ग्रासाहारी एनिमल्स है, घासहारी एनिमल्स है, उसको वाइल्ड बोर है, नीलगाय है, चित्तल है, उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं. गिर मैमल्स में स्मॉलर मैमल्स लाइक द हेयर, porcupine may be spotted at गिर. हेयर मीन्स और रैबिट्स तो नहीं बोला जाए, उसको हैरी बोला जाए ड्यू टू द वो विच द सर्वाइव इन द वाइल्ड, दैट्स वाई इज कॉल्ड हेयर. और porcupine मीन्स शाहुड़ी may be spotted at the गिर. रेप्टाइल्स की बात किया जाए तो रेप्टाइल्स लाइक मॉनिटर लिजर्ड, मार्च क्रोकोडाइल, हिल tortoise, pythons and snake can be spotted at गिर. We can discuss in detail our species. अगर गिर बर्ड्स की बात किया जाए तो pigeon woodpecker, brown fish owl, crested spartan eagle, crested tree swift, black-headed oriole, बॉर्निस ईगल, रॉक ब्रेस्टेड क्विल, ये सारे जो बर्ड्स हैं, ठीक है, वो गिर में रिकॉर्ड किया गया हुआ है. ठीक है. फोना की बात किया जाए अगर इन डिटेल तो यूनिक इकोसिस्टम ऑफ गिर हार्बर्स about 38 species of mammals, 300 species of birds, 37 species of reptiles, and more than 2000 species of insect. That the main carnivores of the Gir are Asiatic lion, leopard, jungle cat, hyena, jackal, mongoose, civet cat, desert cats, and dusty spotted cat are very rare. Thus, the main herbivores of the Gir are chital, nilgai, sambar, four-horned antelope, chinkara, wild boar, blackbuck, porcupine, and pangolin. Blackbuck National Park also in particular Gujarat area in the near is called the Velavadar National Park. The reptilian fauna is represented by the crocodile, the star tortoise, and the monitor lizard, snake, and python. An avian fauna consists of the 300 species of bird, vultures, serpent eagle, woodpecker, Indian pitta, prairie flycatcher, and wild-breasted minivet and pitta. Wildlife conservation have something to cheer about. The India has recorded an 29% increase in the population of Asiatic lion living in Gujarat Gir forest, and the past 5 years within the population growing up to 523 in 2015 and to recent 2020 in lion population is 674. Best visit time to visit the Gir. Gir is often visited through the year except during the monsoon between the June to October. Best time to visit the park is in the visit in the winter from December to March. Gir National Park and Sanctuary is internationally acclaimed for its success in saving the prime species, that is Panthera leopersica. The Gir is one of the oldest sanctuary and in the country and is reserved for the uniqueness is coexistence of the human and being and big cat. Conservation value. Largest compact tract of the deciduous forest in the semi-arid western part of the country. Last home of the Asiatic lion Panthera leopersica, last surviving gene pool in nature.
we discuss in detail. Rich biodiversity area supporting large number of the species including the several endangered species. Highest concentration of the top carnivores, lion and leopards, or the 500, and possibly the single largest population of the marsh crocodile in the country. Catchment area of the 7 major rivers which sustains economic prosperity of this drought prone region. यहाँ पे अगर कंजर्वेशन वैल्यू की बात करते हैं तो लार्जेस्ट कॉम्पैक्ट ट्रैक्ट ऑफ द डाइडेसिरियस फॉरेस्ट इन द सेमी एरिड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. वेस्टर्न पार्ट में डाइडेसिरियस फॉरेस्ट है वो गिर एरिया में देखा जाता है. लास्ट होम ऑफ द एशियाटिक लाइन. एशियाटिक लाइन का जो लास्ट होम है वो गिर है, इसलिए उसकी जीन पूल मेंटेन भी यहाँ पे हो रही है. रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया सपोर्टिंग द लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज इंक्लूडिंग सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज. यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी देखती है, जैव विविधता जो देखने को मिलती है, उसका मतलब सब साइकिल है यहाँ पे. अगर फॉरेस्ट भी है, एनिमल्स भी है, दूसरे एनिमल्स भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी है, उसकी वजह से यहाँ पे स्पीसीज पॉपुलेशन भी मेंटेन है. यहाँ पे अगर बात किया जाए तो मार्स क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन भी इतनी ही है पूरे इंडिया में, कंट्री में. अगर पॉपुलेशन की बात करें तो गिर एरिया में जो क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन है वो भी हाईएस्ट है. ठीक है. एंड नियरेस्ट प्लेस टू विजिट इज कमलेश्वर डैम, गिर भीमसाज, कनकई बानेज इन तुलसीश्याम, सोमनाथ एंड जमजीर वाटरफॉल. And Kamleshwar Dam is the official reserve amidst lush green hills, harboring the largest population of the marsh crocodile in the country. Gir Bhimsach is a water reservoir which can, according to the legend, was formed by the Bhim Van as needed to quench of the thirst of his mother Kunti. Somnath is the famous Somnath Mahadev temples is the just 55 kilometer away from the sanctuary, and Jamjir waterfall in the particular Gir area. This is the Tulsi Sam temple. We can see the back side of the some large birds. Can see this is the Kamleshwar Dam. We can see the reservoir of the one of the reservoir. In the we can see also the forest pattern in particular this area. This is the inside of the photo of the Kamleshwar Dam. We can see some birds also stay there because the fish population is highest. That's why the bird population is also increased. This Somnath temple is nearby the Gir area away from the 55 or 60 or 45 kilometers from the Gir, the Veral district. We can see the is nearby the sea coast. This is Jamjir waterfall in the part of the Gir area, the famous for particular visitors also. How to reach in the Gir? So nearest we can plan to visit the Gir. So reach by the air. Nearest airport is the Rajkot, 165 kilometer via Junagadh. Reach by the bus. Is the so many buses are running to between the area of the Gir. That's one roadside cross in the sanctuary area also. That's why the Talada Sasan is the local area of these local area. That's why the travel or some vehicle also be running there. So reach by bus. Distance 400 kilometer from the Ahmedabad via Rajkot, Junagadh and Mandala. Distance of 43 kilometer from the Verawal site. Distance from 65 kilometer from the Junagadh side, and distance from the 40 kilometer from the Kesod side. Reach by the train is the meter gauge rail line of 395
kilometer from the Ahmedabad, and about 100 kilometer from the 100 or 60 to 100 kilometer from the Gir, because the train not directly running to the Vayamandira but is running from the this other side. Thank you so much. This is the species for the Panthera persica we can see. Thank you.